Now, children, today let's start with chapter number 4, that is mineral and power resources. So, mineral are defined as inorganic natural substance, आपको discuss में मिलता है. It is made up of rocks and we can say that its constitute are defined in the combination of homogeneous substance. ये क्या है? Combination होता है homogeneous substance का, and it is to be used by men more in the form of stone tools. Right? Minerals have played an important role in the period of history. For example, like we have Copper Age, Bronze Age and Iron Age. To characteristics of minerals, they are identified on the basis of their physical and chemical properties. उनका color, उनका hardness, right? उनकी physical property. जैसे coal black होता है, brown होता है, quartz में भी red, black thing का पड़ता है. Solubility is a chemical property of minerals. Salt, for example, is soluble while quartz is insoluble. Minerals are made up of one or more elements. जो elements से बना होता है. ठीक है, most of the mineral are abiotic, inorganic, solid and static. Only coal and mineral have been found in biotic air. So minerals are unevenly distributed over surface of the earth. There are vast resources of petroleum in the Middle East, while large parts of the world have very little of it. Right? So a mineral may be soft or talc and can be hard as a diamond. There is an inverse correlation between what? Quality and quantity of mineral. It means precious minerals are found in small quantities and economically cheap minerals are found in large quantities, right? Minerals takes million of years. Once used up, they cannot be replenished immediately. So we have two types of minerals, metallic and non-metallic. So let's study about metallic. Metallic में आपका iron ore, manganese ore, bauxite ये सब आ जाता है. And metallic has been divided in two parts, ferrous and non-ferrous. Non-metallic में आपका limestone, nickel, coal, petroleum आ जाता है. Now metallic mineral they contain metals. They are hard substance that conduct heat and light. इनको हमने कैरेक्टराइज करा है बाय लस्टर और शाइन. इनको हम मैलिएबल भी कहते हैं एंड डक्टाइल भी कहते हैं. मैलिएबल मतलब इनको आप वेरियस शेप्स में टर्न कर सकते हो. डक्टाइल मतलब वायर बना सकती. And metallic minerals include iron oxide, manganese, ore, galena, bauxite. Now, compounds or solution composed of two or more metals are called alloys. An alloy have certain useful properties that is constituent matter do not have. Right? So, we have metallic minerals. They may be ferrous and non-ferrous. Ferrous mineral like iron ore, manganese ore, bromide, they contain iron. And non-ferrous mineral, they does not contain iron, but they may contain some other metals. जैसे gold हो गया, silver हो गया, lead हो गया. Then we had non-metallic metals, which do not contain metals and they are non-metallic like limestone, mica, gypsum and mineral food में आपका coal and petroleum आ जाता है, right? Now extraction of mineral, हम minerals को extract करते हैं by mining, drilling and quarrying, right? Some process of taking out minerals from rocks buried under the surface is called mine. ठीक है, इसको हम open cast mining कहते हैं, right? Shaft mining क्या होती है, जब हम great depth से निकालते हैं मिनरल, उसे हम shaft mining. Petroleum and natural gas occur far below the surface. Deep wells are bored and take them out. Minerals that lie near a surface are simply dug out by the process. जिसे हम क्या कहते हैं, quarry. Right? Distribution of minerals. Mineral resources are unevenly distributed. We have igneous, metamorphic and sedimentary rock. And minerals, metallic minerals में आपका iron, copper, nickel, chrome, type, platinum आ जाता है. Right? They are found. And non-metallic mineral like limestone and manganese, they are found in sedimentary rock. Right? They are evenly distributed. एशिया की बात करें, iron is mainly found in China and India. Asia produces nearly half of the world. China, Malaysia, and Indonesia, they are among the leading producing nation. And there are the deposit of zinc, bauxite, nickel, copper, manganese also in Asia. Right? Europe, it is one of the leading producers of our iron ore. With had large deposit of iron ore are Russia, Ukraine, Sweden, and France. Right? Mineral deposit like copper, lead, zinc, manganese, and nickel are found in Eastern Europe. South America, Chile, and Peru, they are the leading producer of our copper. Brazil, क्या है आपका largest producer है. Right? So North America की बात करें, they are blessed with rich variety of mineral resources. So three main region of mineral are Canadian Shale, Alpine region, and mountain regions. The Canadian region is rich in iron ore, nickel, gold, uranium, and copper. Appalachian ranges, they are rich in copper, right? So if we talk about Africa, world का largest producer है diamond, gold, platinum. Diamonds are mostly found in Kimberley. A large portion of world gold is produced in
South Africa. Zimbabwe and Zaire. Chromium, uranium, cobalt, bauxite are found in Africa, Libya and Angola. They have oil reserves. Although mineral extraction is not being done by Antarctica, but geologists have predicted some huge reserves of the variety of mineral. Right? So here आपको कुछ मेजर मिनरल्स दिए हैं प्रोड्यूसिंग स्टेट्स सीवेज से आयरन ओर की हम बात करें कहाँ कहाँ देखने को मिलता है कर्नाटका गोवा मध्य प्रदेश महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ उड़ीसा देन वी हैव बॉक्साइट वो भी आपको उड़ीसा में मीका की बात करें लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इंडिया है एक्सपोर्टर भी इंडिया मीका जैसे आपको राजस्थान बिहार झारखंड आंध्र प्रदेश में देखने को मिलेगा मैग्नीस आंध्र प्रदेश महाराष्ट्र हो गया आपका मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ कॉपर देन वी हैव गोल्ड जैसे कोलर माइंस इन कर्नाटका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है गोल्ड का लाइमस्टोन झारखंड उड़ीसा बिहार छत्तीसगढ़ सॉल्ट राजस्थान हो गया महाराष्ट्र हो गया ठीक है गुजरात हो गया इट इज ऑब्टेन फ्रॉम सीज लेक्स एंड रॉक्स इंडिया इज द लीडिंग प्रोड्यूसर और एक्सपोर्टर लीडिंग प्रोड्यूसर भी है एक्सपोर्टर भी है सर नाउ कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स so minerals are indispensable part of life we owe our comfortable life and fast pace of development of mineral so but problem is with mineral is that resources are finite and short lived and they will be finished someday they are non renewable natural resource and there is an urgent need to conserve them right so uses of mineral are used for variety of purpose like iron ore which is used for producing iron and steel and there are main buildings blocks of vast range of items bauxite is processes to make aluminium copper is used in making electric wires and electric components now meaning and importance of power resources so we can say that particular form of resource or energy is called power it is present in natural courses as a sunlight wind water sea the power resources provide a strong base of nation. They demand for power resources increase with the economic development. Right? Types of power resources. We have conventional and non-conventional. Let's study about conventional. Conventional resources of power are those which have been in common use. By long time के लिए हम उनको commonly use करते हैं. Firewood is mainly used for villager to cook meals, boil water, warm up houses. More than 50% of energies come from where? Firewood. People get firewood from forests, farms, right? Fossil fuel, mineral fuel, coal, petroleum, natural gas. They are known as what fossil fuel. ठीक है ये आपको remains of plants and animals में से देखने को मिलते हैं. Next is coal. It is most commonly used fossil fuel. It is most important industrial fuel. ठीक है इसको ये जो फॉर्म होता है किससे फॉर्म होता है डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट्स रिमेन विच गेट बरीड मिलियन ऑफ ईयर वी हैव क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स दैट इज एंथ्रासाइट बिटुमिनस लिग्नाइट एंड एंथ्रासाइट मैक्सिमम आपको कार्बन कंटेंट देखने को मिलेगा और ये मैक्सिमम हीट प्रोड्यूस करता है वही कोल की बात करें इट हैज वेरी हाई थर्मल एफिशिएंसी बट बर्निंग ऑफ कोल कॉजेज पॉल्यूशन और जो उसका रेजिड्यू होता है उसको हम फ्लाई ऐश कहते हैं यूएसए इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कोल इन द वर्ल्ड चाइना रशिया यूक्रेन को फॉलो करता है वही अगर इंडिया की बात करें आपको सब्सटेंशियल रिजर्व देखने को मिलेगा बिहार वेस्ट बंगाल झारखंड एंड तमिलनाडु पेट्रोलियम क्या है डार्क कलर्ड लिक्विड है इट इज फॉर्म बाय डिकम्पोजिशन ऑफ रिमेन्स ऑफ डायनामिक इट इज ड्रिल्ड आउट फ्रॉम द ऑयल वेल उनको सेंड करा जाता है टू रिफाइनरीज राइट ऑल दीज आर डेरिवेटिव्स ऑफ पेट्रोलियम दे आर यूजिंग थर्मल स्टेशन टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी right? Most of the reserve of petroleum lie in Middle East country like Saudi Arabia, Iraq, Iran and Qatar, right? So Assam and Gujarat, Maharashtra, they are the only oil producing states of India. Digboy in Assam, oldest oil well, right? Next is natural gas. It is found along with petroleum deposit, right? ये आपको यूके रशिया नॉर्वे नीदरलैंड में देखने को मिलेंगे मेजर प्रोड्यूसर है नेचुरल गैस के राइट देन वी हैव एडवांटेज ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस दे आर क्लीनर देन कोल चीपर भी हैं बाय प्रोडक्ट्स ऑफ ऑयल एंड नेचुरल गैस दे आर यूज्ड इन वेरियस इंडस्ट्रीज ईजियर टू ट्रांसपोर्ट बाय प्रोडक्ट्स प्रोवाइड वैरायटी ऑफ वैल्यूएबल थिंग्स जिसको हम यूज कर सकते हैं नेचुरल गैस लाइक सीएनजी एंड दे आर वाइडली यूज्ड एज फ्यूल फॉर ट्रांसपोर्ट डिसएडवांटेजेस क्या है पेट्रोलियम और नेचुरल गैस की there is depletion of oxygen due to oil spoiler pollutants released during drilling of natural gas now exploration of new sites of drilling oil then hydropower that is rainwater or river water stored in dams is made to fall from heights और जो falling water है ये flow करता है through pipes inside the dams over a turbine which are placed at the bottom of the dam और जो moving blades है then turn the generator and what they produce electricity and this is called hydroelectricity राइट लीडिंग प्रोड्यूसर कौन है इसका पैराग्वे नॉर्वे ब्राजील चाइना
Bhakra Nagar Dam, Gandhi Sagar, Nagarjuna, Damodar Valley project. These all are the examples. Now we have non-conventional power resources. So the major share of energy produced and consumed in the world is thermal energy. And the sources of thermal energy से fossil fuel हो गया, ये exhaustible resources है with fine reserve and there is an urgent need to develop some alternate source of energy, जिसको आप क्या कर सकते हो, replace कर सकते हो fossil fuel. Right? These sources of energy are inexhaustible in nature, इनको आप renew कर सकते हो. Like let's study about the non-conventional resources. जैसे wind energy हो गई, ये non-conventional है. इनको हम सेल बोट्स वगैरह में यूज करते हैं, राइट. नाउ विंड मिल टू पंप वाटर एंड वी हैव स्पेशल विंड मिल जिनका हम यूज करते हैं टू टर्न सेप्ट ऑफ जनरेशन टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी. राइट. जर्मनी, यूएसए, स्पेन, इंडिया, चाइना, डेनमार्क, इटली, फ्रांस एंड यूके, दे आर द कंट्रीज जो क्या करती है, पावर को जनरेट करती है विद विंड. राइट. लाइक तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, गुजरात. सोलर एनर्जी, सन इज द मोस्ट पावरफुल सोर्स ऑफ एनर्जी not only on the earth but in the entire solar system. Solar energy is in the form of heat and light. It is generated everywhere, right? The solar energy can be trapped in solar cell. इनको आप solar cell में trapped कर सकते हैं. Then we had nuclear power. It is obtained from energy stored in the nuclei of atoms of naturally occurring radioactive elements like uranium, thorium. These fuels undergoes nuclear fission. Right? In India, जो झारखंड है आपका और राजस्थान है, they have large deposit of uranium. थोरियम इज फाउंड इन लार्ज क्वांटिटी. थोरियम आपको लार्ज क्वांटिटी में देखने को मिलता है यहाँ पे. राइट. वी हैव कालापक्कम इन तमिलनाडु. ठीक है. तारापुर इन महाराष्ट्र, रावा भट्टा नियर कोटा इन राजस्थान, नरोदा इन उत्तर प्रदेश एंड कायगा इन कर्नाटक. देन जियोथर्मल, हॉट स्प्रिंग्स, एमिशन ऑफ ड्राई और वेट सी. द हीट एनर्जी कैन बी यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी. यूएसए एंड आइसलैंड आर द लीडर इन जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी. बायोगैस ऑर्गेनिक वेस्ट से, जैसे फार्म वेस्ट से, एनिमल ह्यूमन वेस्ट से आप क्या डिकम्पोज करते हो, दैट इज बायोगैस. द यूज ऑफ बायोगैस सेम बर्निंग ऑफ फायरवुड. इससे आप क्या कर सकते हो, कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज को रोक सकते हो. tidal energy and energy generated from tides is called tidal energy. ये harnessed by building dams at narrow opening from the sea. Right? Russia, France and Gulf of Kutch in India, they have huge tidal mill farms. Now conservation of power resources. We should switch off the light, fans, TVs, etc. when they are not in use. Right? Low energy fuels should be used to save fossil. आप CFL और LEDs bulb का use कर सकते हैं. Right? People should reduce amount of energy to provide different products. More and more non-conventional power resources should be used. At domestic level, what you should do, they should support energy efficient and passive solar building design should be used to construct a building. आप जैसे सनरेज फ्रॉम द हीट आती है ना, तो वो आपके विंटर में रिप्लेस करती है सोलर हीट ड्यूरिंग समर. ये आपके होम को वार्म रखते हैं ड्यूरिंग विंटर एंड कूल ड्यूरिंग समर. राइट. दिस इज ऑल इन दिस चैप्टर. होप यू अंडरस्टूड. नाउ वी विल मीट इन नेक्स्ट क्लास. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.